Hi everyone, welcome to StudyIQ. I hope you all are okay. So let's start our discussion. What is the matter of discussion? क्या डिस्कशन करने वाले हैं आज? बेसिकली आई थिंक सब लोगों को एक प्रॉब्लम जरूर फेस हुई होगी अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखा है, वेदर मैं जीएस की बात करूं या ऑप्शनल पेपर की बात करूं, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने पेपर को उठा के देखा है तो आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया होगा. सम टाइम व्हेन यू विल लुक एट द सिलेबस एंड व्हेन ऑन अनदर साइड you will look at the paper, you found there is a little difference, right? Sometimes it is not there in the syllabus, but the still question is asked over there. कुछ बार होता है कि सिलेबस में आपका टॉपिक नहीं है, फिर आपको यहाँ पे मिलता है क्वेश्चन में, फिर आपको लगता है कि यार अननेसेसरली, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या मैं सोर्स को फॉलो करूं, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए. एंड दिस हैपन इवन इन जीएस एंड इवन इन द ऑप्शनल पेपर्स एज वेल. बट स्टिल आज हम ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल की बात करने वाले हैं और वहां पे हम 2021 का पेपर देखेंगे. ज्योग्राफी एज ऑप्शनल हम 2021 का पेपर देखेंगे यहां पे. एंड वी विल लुक एट द सिलेबस कि क्या सिलेबस जो मेरे पास है, वेल डिफाइंड जो सिलेबस यूपीएससी ने मुझे दिया है, क्या पेपर वहीं से आ रहा है या फिर पेपर में कुछ अलग ही पूछा जा रहा है और आपके सिलेबस की चीजें कुछ अलग हो. अगर ऐसा है कि पेपर डायरेक्टली मेरे क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है वहीं से दिया हुआ है, अगर ऐसा है तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, क्योंकि मुझे पता है कि डेफिनेटली मेरे ये टॉपिक हैं जो मेरे को पढ़ने हैं और ऑटोमेटिकली मुझे फाइनल में क्या आउटकम देखने को मिलेगा. आई विल बी हैविंग डेफिनेट सिलेबस, डेफिनेट सोर्सेज और डेफिनेट प्रिपरेशन. यही चीज मुझे काम करनी है. ठीक है, तो इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपकी अपडेट्स होंगे रिलेटेड टू द वीडियोस, यू विल बी हैविंग दोज ऑल एट कपिल भारद्वाज ऑफिशियल. जो भी पीडीएफ होंगी वो भी यहां मिल जाएंगी. kapil.bhardwaj 2022 I3. अगर आप मुझसे कोई बातचीत करना चाहते हो तो आप मुझे यहां पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. राइट, चलिए फिर ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल पेपर 2 की पहले बात करते हैं. पेपर 2 वैसे तो पता ही है आपको, आई थिंक इंडियन ज्योग्राफी का पेपर होता है. पेपर 2 आपका होता है इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का आपका पेपर होगा. पेपर आपका 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी. राइट, सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका पेपर आएगा. दैट इज 1 to 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे और 5 to 8 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में होंगे. फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी आपके चॉइस से आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो बेसिक सवाल यहां पे निकल के आता है कि क्वेश्चन आता कहां से, चाहे वो आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, सेक्शन ए से या सेक्शन बी से, फ्रॉम वेयर एवर द क्वेश्चन इज. हम ये देखना चाहते हैं कि आपका सिलेबस से क्वेश्चन आ भी रहा है या नहीं. मतलब यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, अगर मैं उसको प्रिपेयर कर लेता हूं, जो कि हम क्लास में करने वाले हैं, ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट 16 अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं और वहां पे हम स्टडी भी करने वाले हैं टॉपिक वाइज. जो भी आपका यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस होगा, कंटेम्प्रेरी इश्यूज होंगे, हम उसको कवर करने वाले. बट स्टिल माय क्वेश्चन इज कि क्या मेरा पूरा सिलेबस बड़े अच्छे से मैं पूरा कर लेता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है तो यू आर बाउंड टू डू दैट. बट स्टिल उसको करने के बाद क्या मेरे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले जो कि मेरे को शॉकिंग कुछ ऐसा दे देंगे, या फिर मेरा उस सिलेबस से काम चल जाएगा, वो चीजें हम देखेंगे. ठीक है ना, चलिए फिर बात करते हैं. ठीक है, यहां पे सवाल निकल के आता है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. ये 10 टॉपिक आपको अपने सिलेबस में नजर आते हैं और इनके कुछ सब टॉपिक्स होंगे. राइट, ये ब्रॉड आपके 10 टॉपिक्स आते हैं. फिजिकल सेटिंग की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की यहां पे बात कर रहे हैं. देन एग्रीकल्चर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आफ्टर दैट आई हैव द इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, कल्चरल सेटिंग, settlements, regional development and planning, political aspects, contemporary issues. ये 10 topic you have. These are the 10 topics that you have right here. And out of these 10 topics, you have some subtopics. Like you can talk about the industry. If I will be talking about industry, then what can I do? Industry can be the cottage industry. These can be the multinational industry. These can be the automobile industry. The multiple industries, obviously, that we are going to discuss these all industry. In the similar way, the transport can be inland, basically waterway, or it can be the airway, whatever the way of the transport is. Similarly, we have the basically different type of subtopics in a particular topic. Now the question is,
if it comes to the subtopic, let's say I had covered all the syllabus which is right there in the Civil Services Exam UPSC वेबसाइट, जो भी वेबसाइट होगी, नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस मेरे पास है, अगर मैं उसको पूरा कर लेता हूं तो मेरे एग्जाम में क्या देखने को मिलता है उसकी बात करते हैं। अच्छा, मुझे खुद बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि सर कई बार ऐसा होता है कि आपका सिलेबस जो मेंशन है वो मैंने पूरा कर लिया, बट स्टिल मेरे को ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसपे मतलब मुझे नहीं पता था इसको कवर करना था या नहीं, मतलब एटलीस्ट, और सिमिलर चीज आपके साथ बुक रिसोर्सेज के टाइम पे भी होती होगी। यू कैन रेफर दी XYZ बुक, जैसे कि DR खुलर को बोला जाता है एज अ रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं फॉर पेपर 2, बट स्टिल यहां पे एक वर्ड यूज कर दिया जाएगा कि सेलेक्टिव उसको स्टडी करना है ना। व्हाट इज सेलेक्टिव, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, हाउ आई केम टू नो, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि पेपर से क्वेश्चन आपका किस तरीके से बन रहा है, दैट वी विल ट्राई टू डू। चलिए, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट को, आप खुद बताइए कि कितने लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आई है, इधर रिसोर्सेज से रिलेटेड और आपका टॉपिक से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेक्शन ए की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है, ठीक है ना। सेक्शन ए पेपर 2 का जो आपका आता है उसमें क्या गिवन होता है आपको। सेक्शन ए में मोस्टली आपको मिलती हैं क्या चीजें, कुछ लोकेशन होती है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में यू हैव सम लोकेशंस। कैसी लोकेशंस है, बेसिकली यहां पे आपको 10 लोकेशंस मिलती हैं जो आपको मैप पे स्केल करना होता है। यू हैव टू मार्क दोज लोकेशंस ओवर द मैप एंड फिर उसके बारे में आपको कुछ 2 लाइंस लिखना होता है कि क्या बेसिकली उसकी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। ये काम आपको करना होता है। ये पेपर 1 का पार्ट है, ठीक है ना। इसमें 10 क्वेश्चंस, अगर मैं 10 लोकेशंस की बात करूं, देखिए जीरो वैली के बारे में बात की गई है, आपका केचोपेली पालरी लेक के बारे में बात की गई है, यहां पे आपको टोर्नामल के बारे में बात की गई है, सुब्रन रेखा रिवर पूछा है, कोडेरमा पूछा है, सर क्रीक के बारे में बात की, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की, पीछी डैम की बात की, दीघा बीच की बात की और पंबन आइलैंड की बात की। ये सारे जो आपकी लोकेशंस हैं, इनमें से कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो कि आप स्टैटिक एग्जाम में पढ़ते हो, मतलब जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, एट दैट टाइम मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आप सबने सुना होगा सर क्रीक का नाम, गुजरात के हमारे बाउंड्री पे है, पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर पे है, डिस्प्यूट हमारा आता है, राइट और नॉट। ये चीजें मेरे को देखने को मिलती हैं, सर्टेनली ये चीजें मुझे देखने को मिलती हैं। सिमिलरली पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम डेफिनेटली यहां पे पढ़ते हैं, सुब्रन रेखा रिवर के बारे में डेफिनेटली हम यहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, वैसे तो डैम, पीछी डैम के बारे में भी आप पढ़ते हो, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे आप क्या करते हो, यूजुअली स्टडी करते हो। रिमेनिंग जो सारी लोकेशंस है ना, दे वर डेफिनेटली इन न्यूज और वो पूछी गई है, ठीक है ना। आपको क्या है पूछा गया है, यू हैड दे हैड आस्क्ड यू बिकॉज दे वर इन न्यूज। लाइक दीघा बीच की अगर मैं बात करूं, दिस बीच वाज ऑफ एट द टाइम ऑफ कोविड, काफी लंबे टाइम तक इस बीच के ऊपर अलाउड नहीं था जाना एंड इट वाज क्वाइट पॉपुलर बीच है। बता सकते हैं कहां पे, वेस्ट बंगाल में, और इसको ओपन किया गया टूरिज्म के लिए, ऑटोमेटिकली उससे टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री, मेरे पास एक टॉपिक भी आता है, तो सर्टेनली अगर टूरिज्म से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, आई मस्ट नीड टू कीप दिस इन माइंड, मुझे इसको ध्यान देना चाहिए। गेटिंग इट, मुझे ये पता लगता है कि बेसिकली ये जो लोकेशंस हैं, ये लोकेशंस क्या बता रही हैं आपको, ये लोकेशन सारी करंट की अफेयर की न्यूज हैं, करंट अफेयर से न्यूज है। एवरी न्यूज इज फ्रॉम करंट अफेयर और द स्टैटिक पार्ट जो कि हम स्टडी करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। सिमिलरली यहां देखिए क्वेश्चन 1 पार्ट बी लिखा क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। हमें क्या करना है, हमें लिखना है जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ बायलैटरल रिलेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। अब मैं जानना चाहता हूं, यस, जैसे प्रतीक ने कमेंट किया वेस्ट बंगाल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, डेफिनेटली वो चीज है, राइट। बेसिक सवाल है, न्यूज में रहती हैं चीजें, आपको पूछी जाती है करंट अफेयर के लिए। जो पार्ट होगा हम अपनी क्लास में ही कवर करेंगे, आपको सारी लोकेशंस आराम से कवर हो जाएंगी। यहां आ जाइए, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, मतलब मेरे सिलेबस में है क्या। ये देखिए, सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। यहां देखो, जब आप फिजिकल सेटलमेंट पढ़ते हो ना, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, वो होगा स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें हम नेबरिंग कंट्री आपको पता ही है, नेपाल के बारे में भी पढ़ेंगे, भूटान के बारे में पढ़ेंगे, म्यांमार की बात करेंगे, बांग्लादेश की भी बात करेंगे, चाइना की भी, सबकी बात करेंगे। और उसमें में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट किसका, इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में आपको डिस्कस करना है।
आई थिंक जो आपके कॉपी में नोट्स होगा, जो आपको हैंडमेड नोट्स मिलेगा, इवन आई विल से कि जो आपको बेसिकली क्लास के साथ नोट्स मिलने वाला है, इवन जो क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, एवरीवेयर आपको ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में मिलेगा। और अगर मिलेगा प्रैक्टिस में तो डेफिनेटली आपको ये फायदा करने वाला है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास पूछा जा रहा है, डायरेक्टली आपके नोट से क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा, डिस्कस द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉल्केनिक सॉइल ऑफ इंडिया। मतलब डू आई हैव दिस टॉपिक इन माई पर्टिकुलर एग्जाम पर्सपेक्टिव, इन माई सिलेबस इटसेल्फ। मेरे पास क्या मेरे सिलेबस में ये पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, लुक एट योर पार्ट। ठीक है, आप देखिए ये जो पर्टिकुलर सॉइल वाला पार्ट है ये आपके सिलेबस में निकल के आता है। फिजिकल सेटिंग के अंदर सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे हम? डायरेक्टली सॉइल टाइप्स के अंदर इंडिया में टोटल डिफरेंट 8 टाइप्स की जो सॉइल है सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। एंड हाउ अमेजिंग इट इज गोइंग टू बी, अगर आपने पहले से इस पे क्वेश्चन लिखा है, आपके नोट्स में डायरेक्टली वो प्रिंटेड है, आपके हैंडमेड नोट्स में भी वो अवेलेबल है, आपकी क्लास में उसको डिस्कस भी किया गया है, एंड देन इट इज अपीयरिंग इन योर एग्जाम, डेफिनेटली आपको उसकी काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं अगर आपको बोलूं ना, टू बी फ्रैंक, अगर आपने कोई भी चीज ऐसी होती है जो आपने क्लास में पढ़ी और डायरेक्टली इट इज आस्क इन योर एग्जाम, अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग होता है, डिफरेंट स्काई पे टच कर रहा होता है। मैं ये बोलूंगा कि उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अदर क्वेश्चंस के लिए भी आपको आइडिया देता है। और आपका ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल पेपर जो है वो डेफिनेटली इसी टाइप का पेपर है, जिसके अंदर की वेरिएबिलिटी का बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं देखा जा रहा। कारण सिंपल है, आपकी जो सिलेबस में चीजें हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप कवर कर पाने, डेफिनेटली आपको जहां पे क्वेश्चन मिलेगा वो बिल्कुल सुपर इंपोज मिलेगा आपके सिलेबस के साथ में। पूरा पेपर देखेंगे कि कहां कहां पे आपका सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमने देखा भूटान का रिलेशन, जो बी पार्ट था ये हो चुका है। सॉइल ऑफ इंडिया ये भी हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट, गिव अ रीजन अकाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द शुगर इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया। आपको बताना है कि हमारे जो नॉर्थ में और पेनिनसुलर इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। क्या ये मेरे सिलेबस का पार्ट है? यस, आई डू हैव। जब मैं इंडस्ट्रीज का टॉपिक आता हूं, फोर्थ पिलर अगर आपको याद होगा तो आपके सिलेबस में फोर्थ पिलर इंडस्ट्री पे है, जिसमें अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। एंड देयर यू हैव इवन द शुगर इंडस्ट्री। यहां पे आपको शुगर इंडस्ट्री भी गिवन है, मतलब डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आपके सिलेबस से मैप्ड है। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, कंप्लीट पेपर, मैं ये कहना चाहता हूं कंप्लीट फुल पेपर, पूरे पेपर में कहीं पे भी ऐसे आपको नजर नहीं आता कि ये सिलेबस से मैप नहीं है चीजें। बेसिकली मुझे पता लगता है डेफिनेटली कि अगर इफ आई एम प्रिपेयरिंग दिस डेफिनेट टॉपिक, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना, दिस इज अ बिग इशू जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में नहीं है। आपके सामने जो लिखा है, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड इट वेल, डेफिनेटली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा। चलिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका देखने को मिला, लैंडस्लाइड इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द हिमालयन रीजन। लैंडस्लाइड क्या है? एक मेजर प्रॉब्लम है हिमालयन रीजन में, हमें सबको पता है। बताना क्या? डिस्कस इट्स कॉजेस एंड मिटिगेशन मेजर्स। आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको इंप्रूव करना है। किस मैनर में इंप्रूव करना है? हमें उसको डीप स्टडी मैप के साथ में उसको एनरिच करना है, ठीक है ना। हमें उसको मैप के साथ में एनरिच भी करना है। तो अगर मैं यहां देखूं तो आप देखिए यहां पे आपका क्या सिलेबस आता है। आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे डेली लाइफ में जो इश्यूज है, प्रेजेंटली जो इश्यूज रेज होते हैं, उसमें आपका पहला ही पार्ट है इकोलॉजिकल इशू, जिसमें एनवायरमेंटल हैजार्ड और लैंडस्लाइड दिया हुआ है। यहां पे आपके लैंडस्लाइड का टॉपिक हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एंड डेफिनेटली इसी के ऊपर आपको डायरेक्टली लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। अब लैंडस्लाइड के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड है तो कैसे होता है, आपके हिमालयाज में लैंडस्लाइड है तो उसके क्या रीजन है, एंड डेफिनेटली वहां से आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली इट इज गेटिंग मैप्ड फ्रॉम योर बेसिक पार्ट, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है, अप्रेज व्हाई ड्रॉट is one of the most common climatic extremes in India. I think you also know, sometime we used to see in some areas there is a huge flooding situation, but still there are lot of areas in India जो कि drought से
सफर करते हैं, राइट और नॉट? काफी सारे ऐसे एरियाज हैं आपके जो स्टिल क्या करते हैं, ड्रॉट से सफर करते हैं। और अगर काफी सारे मेरे एरियाज ड्रॉट से सफर करते हैं तो डेफिनेटली आई मस्ट टॉक अबाउट द ड्रॉट। एंड यस, इट इज देयर इन योर सिलेबस एज वेल। जहां पे आपने लैंडस्लाइड देखा था, सिमिलर प्लेस पे आप ड्रॉट देखते हो। आप ये देखिए, एक ही पार्ट से आपके 2 क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं, ये भी आया और ये वाला भी आया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन सिंपली आपका, इफ यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, अगर आप डेफिनेटली अपने सिलेबस को अच्छे से पूरा कर रहे हैं, राइट रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल फाउंड कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी आउटकम्स हैं, वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दिस, दैट इज द डेजर्टिक पार्ट और द ड्रॉट पार्ट. The next question is, discuss the ecological and economical challenges of the river linking in India. What challenges? Economical as well as the ecological challenges we have to talk about. About what? River linking in India. Do I have this part in my syllabus? Let's see. Yes, I do have. In the contemporary issues again, the 12th part is the linkage of the river. Here we will be talking about the different perspective, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि what kind of rivers are getting interlinked, what are the challenges we have to face basically when we are interlinking the river, and what are the problems that we can resolve by interlinking the rivers. Similar thing is found as in the previous questions, it is also there. So basically, with respect to the every linkage of the rivers, we will be focusing on it. Let's say it is Cane-Betwa project. We will be analyzing how much economical perspective, how much budget diversion is required, how much ecological impact will be there. Obviously, when we are playing with the natural flow of the river, definitely some areas are going to be under submergence and some areas are going to be benefited out of it. Right? Some areas are going to be benefited out of it. So, the quite simple example is, whenever I'm talking about questions, they are directly mapped with these particular parts, syllabus, directly mapped with your syllabus. So, important thing is, we must complete each and every part of your syllabus. Let's say, for example, on an average, if I will be talking about on an average, I have the 10 subtopics in a topic, that is 100 topic. If I am preparing 100 of the topic that are interlinked, like monsoon and flood, right? If I will prepare those, definitely all the questions are going to be from my part itself, right? All the topics are going to be from my part itself, right? Okay. Next important thing is, right here, we had seen third question. Now what? Second question. Now what is third question? Discuss the importance of the solar energy in the future economic development of India. What do you think? What is the importance of solar energy in the future economic development of India? See, if I will be talking about the economic development of India, we have a lot of burden regarding energy security on our economical perspective. Why? Because India doesn't have much of the high quality natural resources. Like if we do have the coal, even that is of the poor quality. I think everyone knows about it. In the similar way, if we have the petroleum, then what about the petrol? Petrol reserves are not so much high. Right? They are not so much high. So what will be the outcome? Definitely in that case, what we are going to have, हमें पता लगता है right here कि अगर मेरे पास ये चीज कि resources, if I am not having in the enriched amount, I must import them. If we are importing, it will be a burden on the economic system. But do we study this in our syllabus? Yes, definitely. See right here, if I will be talking about the resources, there we will be talking about the energy resources of India. Those energy resources, we will be seeing what energy resources we have to in our favor. What kind of resources are not in our favor, we have to import them. And certainly in that energy resources, we will be talking about the solar energy. I think everyone knows International Solar Alliance. This will also be covered in case of contemporary issues, and even it will also be covered in case of energy. And that question is directly coming in your way, directly coming to your question part, right? So definitely you will be having edge over there. इस पे आपको फायदा मिलने वाला है. Next is second question. Critically examine the importance of smart cities program. What do you have?
smart city program. You have to discuss right here the smart cities program for solving the urban problems of India. So what is smart city program? What it talk about? What are the features of this particular part? And basically we have to do critical examination of this. What does it mean? We have to talk about the pros and cons, and finally we have to conclude what can be done in the conclusion part. So right here, if it is there in my syllabus, then definitely I can do it comfortably. Otherwise it is going to create my problem. Let's see where I can map this particular question in my syllabus. If you will look at this, you have the topic of settlement. The 7th topic is settlement. Right, this is basically the settlement part, and in settlement part there is a problems of urbanization and remedies. There is a definite topic, problems of urbanization and its remedies, and obviously I think the problem of basically smart city is a problem of urbanization. So it is a problem of urbanization which is directly mapped from your syllabus, and question is being asked. So I think if you are completing it holistically, obviously you are going to see a paper which is very friendly to you. बहुत फ्रेंडली होने वाला है आपके साथ में पेपर. If you will look at the paper ना, you will found कि हर एक क्वेश्चन आपने पहले से लिखा होगा. Right? When we will cover the syllabus, we will do the answer writing practice. You will found that कि आपने पेपर में सारी चीजें पहले से की हुई होंगी. You will never found anything that will be new to you. Quite simple, right? Next important thing. After this, after solving the urbanization problem, next part of the third question is examine the significance of ecotourism in relation to the socio-economic development and biodiversity conservation in India. What do you have? Ecotourism. You have to talk about ecotourism, which can solve the socio-economic problem. That is, they can do the socio-economic development as well as the biodiversity conservation. Where do I have this particular part in my syllabus? If you will look at this, then in industry we have the tourism, and in which specifically UPSC mention about ecotourism. Tourism including ecotourism. So you have tourism, but out of it even you have specifically mentioned as ecotourism. And there we will be studying about ecotourism, and definitely it is going to help you. So the basic question is, abhi tak we doesn't have even a single question which is not directly mapped from my topics. And if I am doing just these old topics, even I will be able to crack my exam very easily. Next question, the 4th one. Discuss the reserve, distribution and the production of all the variety of coals in India. Again, I think you got the point. Where it will be mapped. Definitely in case of resources, we will be talking about the different resources, different energy resources, different minerals. In case of minerals, even we will be talking about the coal. And it is just want to ask you about the distribution of coal in India, distribution, production of all variety of coals in India, and that you can definitely do. Right? You can definitely do that. Next question is, so right here in the minerals you can study the coals. We will definitely study the coals. We will be looking at the different type of belt which are present in India where we can produce coal. What kind of coal we used to have, means variety of coal. Do we have the import of coal, or we used to export it? And if we have the resources, even then why we are importing, then why we are doing so? These all challenges we will be discussing in detail, and that is directly asked in your question paper. Right? Next. Describe the salient feature of the east flowing rivers of India. I think this is a quite easy question. I think this is an easy one question. They are directly, I think those people who are from the GS background, even they can answer this particular question. Those people who hadn't discussed anything, right, about the optional paper, even they have the idea about the all features of the east flowing river. But still, I will advise you, some of the topic even we will discuss, you will find there is a little difference in the knowledge of GS as well in the knowledge of optional paper. So when we will look at the optional paper, we will look at some of the advanced knowledge, but still it is the part of your exam. And right here you have the physical setting of India, and there the second part is the drainage system of India. What do you have? The drainage system of India. And there we will be talking about the peninsular river, and they are divided into west flowing river and the east flowing river. Definitely we will be talking about east flowing rivers. And I think you also know some of the feature even as of now. Presently even you are aware about some of the features of the east flowing river, and definitely that is going to give you some more edge right here. Next question. Critically examine the problems of the
interstate border disputes in India. You have to examine the interstate border dispute in India itself. When it is coming to interstate border dispute, the political aspect, ninth topic of your exam, and there you have the fourth subtopic, interstate issues. There we will be discussing about different type of states. What are the issues in different states? Why they got separated? What are the other states who are willing to get separated? And do we have any benefit to oppose the bifurcation of the state? States or central government must try to overlap or must try to concise them in the single part. These things we are going to discuss right here, and that is the interstate issues. That is the interstate issues, right? Next topic. Question 5, that is section B. Right here they are asking silent feature of the Project Tiger in India. You have to tell them what are the silent features of the Project Tiger in India, right? So Project Tiger, if I will be talking about the Project Tiger, then where you will be discussing the Project Tiger? Right here in basically the Project Tiger, which was in news. So there is a contemporary issue wala topic. There we will be discussing about the Project Tiger, but still apart from this, we will be discussing about the development, basically development program of what? Command Area Development Program. There we will be talking about how development of the national park, how development of other areas. These all things we will be discussing right here. We will be talking about the different project, and even it is in current affair news. So we will definitely be covering current affair news. Even today I will advise you all, geography and you plus Yojana, definitely you must study for geography as an optional paper. If you are thinking or you are planning to study geography as an optional, I will say GYU and Yojana. These two magazines are definitely for you. You must scroll them every month. जब भी आपका पेपर आता है, जब भी आपका एडिशन आता है, you must refer these magazines. Some of the questions are directly asked from here and even here, which are even the part of your syllabus, but still I will say for upgradation of the current affair. And definitely there are certain yojanas which are important. Sometimes the yojana have such kind of topic which are not important for us, but yes, there are certain topics which are quite important with respect to the geography as an optional paper, so we must focus on them, right? Definitely. Chali. Next, the problem of cloudburst. The problem of cloudburst, I think it is a climatic phenomena. Even we will be discussing this particular part in paper 1. And now you can see the paper 1's importance is right here in the paper 2. Paper 1's importance is right here in the paper 2. In the climatic part, climatology part, that is the second pillar of your syllabus in the paper 1. Right here the question is directly asked over the cloudburst. Discuss the watershed management for the soil and water conservation in the hilly region of India. You have to tell them watershed management. What is watershed management? Definitely is the sixth pillar of your syllabus, that is watershed management. Right here we will be discussing the positive, the negatives of watershed management, how we can do, how we can improve it, that you will be definitely talking about. And next is the critically examine the relevance of Ravenstein law of population migration. In paper 1 we will be discussing about human geography. In human geography we will be discussing multiple model. Actually, personally speaking, nowadays human geography is becoming more important. I will definitely say, being a part of the geographer, being a part of the geography, I will definitely say instead of the physical geography, now the more importance must be given to the human geography, because it is the most neglected part which we had ever do. But still UPSC is not neglecting it, and it is easy as well. We will get to know about the human population. We will get to know how the human population is evolving. We will get to know how the settlements is happening with the people. We will get to know what kind of economical activities are quite important with respect to the people, and that definitely makes you the IAS, basically, because these qualities are required to be in an individual. And these things are basically directly asked from the human geography. We will discuss multiple models. So can I say the paper 2 is totally different from paper 1? I think I can't. I think I can't say that paper 2 is definitely different from paper 1. Similarly, they have asked Ashok Mitra's classification method for Indian cities. That is a part of the current affair news. Even apart from this, I hope so, even in 2020 they can ask you about Kasturi Rangan Committee. Kasturi Rangan Committee for Western Ghat.
They can even ask you about Gadgil Committee for the Western Ghat. I just want to say, if there is a committee formed for some of the regions, that is geographical region like the Western Ghat conservation, or it can be the urbanization, so definitely they must ask question, and these all things are covered in Yojana itself, that we will be discussing itself the part of the course. Wherever we have the importance, there we will be referring particular part. So it's not necessary you will be studying the complete Yojana, but still आप क्या कर सकते हैं, you have to refer the sum of the particular edition and you have to revise and re-revise them. Right? Next question. Sixth one. Explain the impact of tropical cyclones and the western disturbances on the Indian climate. I think those people who had studied GS geography, they can even answer this particular question. You don't think so you can answer this? सब ने क्या किया है? सबने क्या किया? Who had studied the GS? I think, is there anyone who can't answer this particular question? I don't think so there is anyone. But still, when it comes to the optional paper, we have the requirement of little advancement. Like you can take a simple example of your current topic, that is ocean currents. Even that is the simplest topic, I think, that is there in the GS, that we have the warm current, old current. Even it have the little advancement when it comes to the optional paper. So directly right here we have the advancement. But still, the sixth question, part A, from where it is asked, कहाँ से पूछा गया है? Tropical cyclones and western disturbances. The tropical cyclones and western disturbances, they are directly asked from the tropical cyclone and western disturbances, that what are basically the tropical cyclones, how they got developed, what are their influences, and so on and so on. Similarly, second part, critically examine the issues of the groundwater resources in India. You have to tell them about the groundwater resources. Obviously, you have to compare some of the areas. Obviously, there are some of the areas which are performing very well in case of groundwater, and there are some of the areas where even we have the polluted groundwater. Their level of groundwater is quite low, that we have to discuss. But still, is it there in your syllabus? Yes, definitely. Right here you have the resources, and there the surface and the groundwater is there in itself, directly mentioned in your syllabus. It is directly mentioned in your syllabus. Next. Describe the structure and the relief feature of the Deccan Plateau. You have to talk about the relief features of Deccan Plateau. Obviously, in the physiography of India, we will be discussing about the all features: northern mountain, plain, Deccan Plateau, hill ranges, and so on and so on. But still, is it the part of your syllabus? You can see right here in the physical settings, you have the structure and relief, one topic, the physiographic region in India, the another topic. These are the two topics which are covering itself the single topic, and that's why basically I can say they are directly asking question from the syllabus which is right there in your exam. They had put it a syllabus. एक आपकी वेबसाइट पे syllabus डाला. You can Google this syllabus. ठीक है? UPSC, you will type just UPSC geography optional syllabus. आप टाइप करेंगे, आपके पास एक PDF आएगी. सारी चीजें मैपिंग करके आप देख सकते हैं कि definitely all things are directly asked from the syllabus which is mentioned. कुछ डायलेमा ही नहीं है, कुछ ऐसी चीजें पूछ ही नहीं रहे, that is not there in the syllabus. And if you have the certain topics that this is the part from where the question is going to come and you will definitely become IAS, I don't think so something can be easy more than that. इससे आसान क्या हो सकता है, right? तो इससे आसान नहीं हो सकती चीजें. देखो नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या, क्रिटिकली एग्जामाइन द पंचायती राज सिस्टम इज अ कैटलिस्ट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग इन इंडिया. दे आर आस्किंग अबाउट द पंचायती राज सिस्टम एंड हाउ बेसिकली दे आर बेसिकली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर व्हाट, decentralization in India. So when it comes to decentralization, right here if you will look at, then what do we have? The multi-level planning. In that directly in the regional development we have the panchayati raj system directly and the decentralization, and they are directly mapped panchayati raj and decentralization planning directly. The word is right here, right? Panchayati raj system, catalyst for the decentralization. Definitely they are asking to you, they are asking you to read this particular topic. They are asking you to prepare this particular topic, and even if you are not doing, then you are doing injustice with yourself. This is an injustice if you are not preparing this particular topic. So I think if you are well read with the syllabus, if you are well read with the syllabus, लास्ट में आपका रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे कि क्या बेसिकली किस तरीके से आप अभी शुरू कर सकते हो, क्या काम करना चाहिए आपको, उसके ऊपर भी बात करेंगे. बट डेफिनेटली यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायरेक्टली दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेबस पार्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, देखो
itself in the this particular part, they had asked about identify the major industrial corridors of India and specifically Bengaluru Mumbai corridor. Specifically, they had asked the characteristics of Bengaluru Mumbai corridor. Come to the syllabus part. Right here in the industry part, you have the multinational industries, one part, but special economic zone you have, and in special economic zone we will be talking about basically what? This particular part, that is the industrial corridor. Industrial corridor we will be discussing right here. So they are directly asking you question about this, right? Definitely. Next important thing is critically assess the status of the balance of the trade in India and suggest some of the measures. Sorry, this is 8th question. This is 8th question. The one part is also left. Multinational corporation, MNCs, is there in syllabus. Multinational and liberalization. So I think MNCs are also there. Aapka corridors are also there. You have the industries also there. So basically right here, from this particular part, I think in this particular paper itself, we have lot of questions. Immediately on consecutive topics, we have the question. Right here, you have the question, this one and this one, directly from the 6 and 7 topic. From a single topic, that is industry, they are asking you 2 questions. What does it mean? Definitely, you have a lot of advantage when you are mapping your notes with respect to the syllabus. If you have a basically little part of, let's say 2 pages, I can say 2 pages. If you have 2 pages for this particular topic, then definitely you are going to replicate those 2 pages in your exam and you are going to take maximum marks out of it. I will be talking about the reality of this particular paper, that how you should basically master this paper, that I will let you know in the last of the session. Just wait for a minute. See, 8th question. This is the last question. Examine how information and communication technology has boosted the development of certain regions of India. How basically information IT sector it is talking about, that is boosting the development in India. You can see right here in the transport, communication and trade, we have the 6th topic, development in communication and information technology and their impact on the economy and society. They are directly asking you the communication and basically technology, how it is basically promoting the different regions of India. So obviously it is a definite part which is directly mapped with your syllabus. Next part is discuss the command area development program. Command area development program. Right here in your syllabus you have the command area development program. And the third part is critically assess the status of the balance of trade in India and suggest the some of the measures to combat the issue. Balance of trade they are talking about, and balance of trade is right here in the transportation part, trade balance. So in total what I want to say, this is in front of you. This is I will share over the Telegram channel even, and you can download the syllabus even while going on the website of UPSC. What you will find right there, you will be having basically a definite syllabus that is divided into 10 parts. You will be having 8 questions and the sub questions, sub parts as well. All the sub questions are directly mapped with your syllabus. Directly. Now what must be the preparation strategy? What should I do if I want to cover these all topics? Basically one thing is, if someone is basically trying to ask, or basically they are willing to ask, you can comment. If you want to ask something, even you can comment. I will address this particular part as well. But yeah, one of the comment was resources, about resources, that what must I refer for? I will say for paper 2 you can use as a reference book DR Cooler. For reference I am saying. What does it mean? What does it mean? It simply means that if the DR Cooler is having a lot of pages, obviously you also knows it is a quite thick book. And now it is quite impossible for an individual to cover the complete book. So we must read it selectively. The important thing is we must focus on all the books selectively. We can't go through page to page, from one page to last page. That is quite problem creating situation. So anyhow I have to minimize. Anyhow I have to minimize my resources, and anyhow I have to increase my revision. Revision is the key for the success, that I am telling you. Those people who are doing a lot of basically content coverage and single revision, I will say they will lose the battle. But the person who is doing the minimum content but revising it thrice, I will say going to won the battle. The simple conclusion is. So that's why I will say minimize your resources, but still you have to increase the revision. Now what we are going to do for this perspective, we will research on the different books. We will research from our own side.
we will add on the current affair and we will give you definitely very right resources for all these particular topic, because UPSC is directly mapping their answer and questions from this particular part. So we will be covering holistic, all the topic holistically right here in this particular batch, and that is going to start from the 16th of August. Right here you can see the fees, but still you can use the code Kapil Live to subscribe this particular part, and there you will be having 12,499. One more important thing that I would like to tell you, when you will explore everything, you will try to study, and then after you will be enrolling yourself into the course, I will advise you definitely you must enroll before 16th of August. If you want to enroll and you are willing to cover optional as a geography, then why you must lose your 1, 2, 3, 4 classes and then after you start thinking that I must enroll? Because initiation gives us a lot of energy, a lot of right direction, right? So basically right here you can enroll, and the course timing going to be from 1 PM. What you are going to get in this particular course? Yeah, one more important thing, एक और चीज जो कि लाइव फाउंडेशन के लिए है, लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच का एडमिशन नाउ आर गोइंग टू क्लोज। कब? आपका 8th को क्लोज हो जाएगा, मतलब 7th आपके पास में एक दिन बचा है जो आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप एनरोल करते हो, स्टिल यू कैन यूज द कोड कपिल लाइव, यू विल बी गेटिंग इट द लाइव फाउंडेशन कोर्स एट 18,999 ओनली, जो कि बैच 1st of August से स्टार्ट हुआ है। यू कैन यूज द कोड कपिल लाइव, इसका एडमिशन क्लोज होने वाला है। So this is the last opportunity you have. If you are willing, you can enroll. Otherwise, it will be closed. But still, if I will be talking about the optional paper, then what you will be getting? The live classes of 400 plus hours lecture. Then after, comprehensive coverage of the high quality notes. Because yes, necessarily, हमें क्या करना है? You can see directly questions are asked from your particular syllabus. So we have to cover it holistically. Then after, handwritten notes you will be getting. You doesn't have need to note down anything. You just have to focus over the class. You will be getting handwritten notes after the class immediately. And then after, live answer writing program under the guidance of the faculty. That is me. In case of geography, you will be getting basically live guidance program. And then after, when it comes to the previous year question discussion, definitely we will map all the previous year question. Even I will say from 1985. From 1985, I will map all the questions with respect to your exam, with your syllabus. Whatever the topic we will be discussing, I will give you a question even from the 1985. And from 1985, we will even look how the pattern is getting changed. That we will be focusing right here. And then after, we will be talking about the current affairs related to geography. That can be asked, like they had asked some of the current affairs, we must focus upon them. And then after, you will be having doubt clearing session and means mentorship session to enhance your marks, because finally our target is to gain marks. अगर marks gain करना है तो anyhow we have to focus on it. तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, right? So still you have the chance, you can enroll. Basically on 16th of August we are going to start the class, and I think everyone must be there with the full of energy. After 15th August, 15 अगस्त आपका basically that is the day of India, that I will say, and after that you can start your journey, and definitely you will become IAS with the help of geography as an optional paper. और I think यार ये जो टॉपिक थे ना, ये काफी सारे टॉपिक आपने खुद महसूस किया होगा कि दे आर द पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर। ये आपके जीएस पेपर का पार्ट है। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम यहां करते हैं ना, आपका जीएस 1 तो जहां पे ज्योग्राफी इटसेल्फ आ रहा है, आपका डेफिनेटली कवर होने वाला है। इसके अलावा ट्रेड है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो आपका पेपर 3 का पार्ट होता है। इसके अलावा एनवायरमेंट जो पेपर 3 का पार्ट है, वो डेफिनेटली आपका कवर होने वाला पेपर 1 की रेस्पेक्ट से। मेरे ख्याल से आपकी काफी कुछ चीजें आराम से यहां कवर हो जाएंगी। सो एनरोल राइट हियर, यूज द कोड कपिल लाइव, गेट इट डिस्काउंटेड। ओके, थैंक्स अ लॉट। Anything else you want to ask? कुछ पूछना चाहते हो? Otherwise, we will wrap up the session, and even we will see the different papers as well of paper 1 as well. We will see how the paper 1 is mapped with the syllabus, because I think so. Geography is the first subject at the top rank that I will say, even in the selection. Every year we have 200 plus selection from the geography as an optional paper. Reason एक ही है, the questions are directly mapped with your syllabus. There is a syllabus, there is a line, you have the notes, and directly question is asked from it. Definitely. उससे ज़्यादा क्या चाहिए? I think you want to become IAS. It is the easiest way. Okay, guys. Thank you very much. All the very best. Take care and analyze the paper. I will share the PDF right there on the Telegram channel, and it is Kapil Bhardwaj official. Kapil Bhardwaj official. Okay. Take care. Bye bye.